सूजित हम एक दो टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ स्मॉल हीट ट्रांसफर ऑन द मिक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो अभी तक हम मिक्रोस्कोपिक सिस्टम को जान चुके हैं और मिक्रोस्कोपिक सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, सिस्टम ए, सिस्टम ए डैश। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें जानना चाहते हैं कि अगर सिस्टम ए डैश से थोड़े सा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है सिस्टम ए डैश से सिस्टम ए को, तो उसके टेम्परेचर में, एंट्रोपी में और नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट में किस तरह का चेंज आएगा। गेटिंग माय वर्ड, हम सिस्टम ए की बात कर रहे हैं। सिस्टम ए जो कि ए डैश से इंटरेक्ट कर रहा है, अगर उससे बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ए को ट्रांसफर हो रहा है तो उसके कारण सिस्टम ए के टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। That means we're going to talk about delta T, what is the change in temperature of system A. We will talk about change in entropy, delta H, and then we will discuss change in number of accessible space for the system A. तो एक छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है and let's say the energy of system A is E minus E0. Once again, E0 is the ground state energy of the system. थर्मोडायनामिक्स में हम ये कंसीडर करते हैं कि सिस्टम की एक रेफरेंस एनर्जी को जरूरत होती है और इस रेफरेंस एनर्जी को आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर नाउ E0. We will discuss this point as ground state energy when we will be discussing about quantum statistics and quantum thermodynamics. So for now the system A is energy state E minus E0, or more specifically I say E bar. E bar is the average energy of system A. The system energy is E bar minus E0. This is the energy of system A. अब सिस्टम ए में अगर एक छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट जिसको मैंने कहा है डेल्टा क्यू, यू कैन से डेल्टा क्यू, यू कैन से डेल्टा क्यू, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट अगर सिस्टम ए को ट्रांसफर कर दिया जाए तो उस चेंज से या उस ट्रांसफर से सिस्टम ए के टेम्परेचर में, एंट्रोपी में और नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट में किस तरह का चेंज आएगा वो हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। So get it students? So let's do it. And what I'm saying that this transfer of heat is very small. So mathematically what we can say that delta Q, or I can say delta Q is much smaller than the energy of system A. That means E bar minus E0. Right? मैथमेटिकली हमने क्या कह दिया है, ये जो स्मॉल अमाउंट है डेल्टा क्यू बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू द एनर्जी ऑफ सिस्टम ए. दिस ई बार इज द एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम ए. और इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं. डेल्टा क्यू, लेट मी से डेल्टा क्यू टू बी डेल्टा ई, because we are only focusing on the thermal interaction. So whenever we talk about the thermal interaction, so according to the first law of thermodynamics, we just neglect the work done to be zero. So from the first law of thermodynamics, we simply get delta Q is equal to delta E as we are taking only thermal interaction. So W is equal to 0, so delta Q is equal to delta E. And with this assumptions, the transfer of heat is very small. Delta Q is a very small quantity and delta Q is delta E. Then let us calculate change in temperature, change in entropy and change in number of accessible states. So first, change in temperature. To get the change in temperature, we know the relation T is equal to 1 upon K beta. हमें रिलेशन पहले से पता है, टेम्परेचर और बीटा का क्या रिलेशन है. टेम्परेचर और बीटा के इस रिलेशन से we can identify delta T. A simple mathematics. We are again doing this mathematics. Now, minus K beta square delta B. Mathematically, there is no issue to write this equation. So simply delta T is equal to minus 1 upon K beta square delta beta. 1 upon K beta is T. So I am writing T beta delta beta the minus sign delta T. Let me more simplify. Delta T upon T is equal to minus delta beta upon beta.
So if I know the right hand side of this equation, I will get to know the left hand side of this equation. अगर मुझे राइट हैंड साइड पे क्या है इस इक्वेशन में पता लग जाता है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को जान लूंगी. और डेल्टा बीटा, as you know, बीटा इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी. बीटा एनर्जी पे डिपेंड करता है. तो अगर बीटा एनर्जी पे डिपेंड करता है देन वी कैन राइट डेल्टा बीटा टू बी डेल्टा बीटा डेल्टा ई डेल्टा ई. जो भी चेंज इन एनर्जी हो रहा है उसके कारण चेंज इन बीटा कुछ इस तरह से होगा मैथमेटिकली. देयर शुड बी नो इशू. So we can simply write delta beta is equal to delta B, delta E, delta. Now what is delta E? Delta E is simply delta Q. Now accessible state, once again, this is E minus E0 to the power F. The accessible state of system A. The system A is an energy state of E bar minus E0 to the power. And with this relation, beta is del upon delta E log E minus E0 power F. And from this relation, we can get F upon E minus E0 beta. Very simple. And this relation differentiating with respect to energy E, once again to this relation will give me minus F E minus E0. I will write bar on this E whole square. As F upon E bar minus E0 is beta, so we can write this relation minus beta upon E minus E0. So we have received delta beta delta A to be minus beta upon E minus E0. And now we can put this relation to here. And remember my delta E is equal to delta Q. So this will give me delta beta is equal to minus beta E minus E0 delta E to be delta Q. So this is delta Q. Now we have obtained delta beta upon delta beta. We have obtained delta beta upon delta beta to be minus 1 upon E minus E0 delta Q. And this relation, we can put the value of delta beta upon delta beta here. And now delta T, we have obtained minus minus plus and delta Q E minus E0. As E minus E0 is the energy of system A, which is very large, and delta Q is a very very small quantity in comparison to E power minus E0. So the right hand side of this equation is very small quantity. So if right hand side of this relation is very small quantity, then what we can simply say that delta T is also very small, very small. तो इनवर्स हम शब्दों में क्या कह सकते हैं, अगर हमने इस सिस्टम को, इस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को बहुत ही स्मॉल हीट ट्रांसफर की है तो टेम्परेचर में जो चेंज है वो भी बहुत ही छोटा होगा. The change in temperature will be very small if we are transferring a small amount of heat to a microscopic system. So all this mathematics we have got this result. So now we have identified what is the change in temperature, and now we will move towards what is the change in entropy of system A due to this small heat transfer. So let us calculate change in entropy. You remember what is the relation between entropy and number of accessible states? You know what is the relation between accessible state and entropy? I hope you remember. You can recall the relation between entropy and accessible state.
we're gonna use that relation. So here, we know log E ohm E bar minus E0 is number of accessible state of the system. Now for the simplicity and just for the mathematical simplicity, I'm just neglecting this ground state energy. For the mathematical simplicity, you can simply write it or you can neglect it. But for the mathematical simplicity, I'm just taking ohm to be function of E bar. This is number of accessible state when we have not transferring any heat to the system. जब हमने सिस्टम को कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं की थी तब ये नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट था, इसमें आप E0 को चाहे तो ले सकते हैं. मैंने यहाँ मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए अभी नेग्लेक्ट किया हुआ है. अगर हम सिस्टम को एक छोटा सा अमाउंट हीट ट्रांसफर कर रहे हैं डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू के कारण चेंज इन एक्सेसिबल स्टेट हो जाएगा, दैट विल बी E बार प्लस डेल्टा क्यू. वटेवर चेंज, अगर हम एनर्जी पे थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो रिलेशन इस तरह से बदल जाएगा. रिमेंबर एक्सेसिबल स्टेट किस तरह से डिफाइन करती है, e की पावर f. तो अगर पहले एक्सेसिबल स्टेट ये थी तो नाउ द एक्सेसिबल स्टेट विल बी e बार प्लस डेल्टा क्यू पावर f. So this is the accessible state for the system A now after transferring a small amount to the system. Now what is delta Q? Delta Q is delta E. Let me take it delta E. Or you can take it only delta Q. जो भी आपको ठीक लगे. So let us do some mathematics. I'm just taking log of this relation. Number of accessible states after transferring a small amount of heat to the system. हमने सिस्टम को एक छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया है, उसके बाद चेंज इन एक्सेसिबल स्टेट कुछ इस तरह का हो जाएगा. और उसके बाद हम कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई करने वाले हैं सो दैट वी कैन गेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. And to observe that, to calculate that, I'm just writing this relation like this: ohm E plus delta Q. Now, in mathematics, you have heard about Taylor series. और टेलर सीरीज तब यूज की जा सकती है जब यहाँ पर ये जो अमाउंट है बहुत ही छोटा है. So you can go through your mathematical books and you can identify what will be the relation if I extend this relation. तो जैसा कि आप टेलर सीरीज में करते हैं उसी टेलर सीरीज को हमने यूज में लेते हुए यहाँ पर इस रिलेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग टेलर सीरीज. So using Taylor series, now I can extend the equation log E ohm E. This will give me log E ohm E bar plus del upon delta E log E ohm E bar multiply delta Q plus 1 by 2 del square del E square log E ohm E bar multiply Q square and so on. So Taylor series हम इसलिए यूज कर पाए क्योंकि ये जो डेल्टा Q है is a very small quantity in comparison to E bar. So by using Taylor series, I have extended this relation that is giving me delta log E ohm E del upon delta E log E ohm E multiply delta Q plus 1 by 2 del square del E square log E ohm E and Q square and so on. And delta Q is a very small quantity in comparison to E bar. So if it is very small, then can I neglect this second term? So in this relation, I can simply neglect this second term, third term. So this is first term, second term and third term. So we can neglect this third term and now we have log E
ohm E bar plus delta Q minus, I'm taking log E to the left hand side, ohm E bar is equal to. Now, recall the relation of beta. What is this quantity? Students, what is this quantity? Is there any picture for this quantity? Yes, this quantity is beta. From the previous class, we know this quantity del upon delta E log E ohm E is beta. So, we can write beta delta Q. Now, in the left hand side, I have beta delta Q. In the right hand side, I have some relation. With the mathematical trick, I can write this relation in two ways. See these two ways. If you have any difficulty, if I write this relation like this, I can write this relation log E ohm delta ohm minus log E ohm. I think there should be no difficulty if I write this relation like this. So mathematically things should be in proper order. So first I can write this relation like this. In other way, what you can say, using both sides, this and this, I can write delta log E ohm E. ये लेफ्ट हैंड साइड हम दो तरीके से लिख सकते हैं मैथमेटिकली. या तो हम इस रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं. इस रिलेशन में ये क्वांटिटी सेम रहेगी और ये जो क्वांटिटी है जिसमें हमने कंट्रीब्यूशन देखा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल हीट ट्रांसफर टू द नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट. इस पूरे रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा ओम इज चेंज इन नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट ड्यू टू दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर. गेट इट? तो हम एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है इस पूरी लेफ्ट साइड को लिखने का. दूसरे तरीके में हम दोनों के डिफरेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं. We can say delta log E ohm E bar after solving this relation. So there are two ways. There should be no mathematical difficulty. I am using the second way. Firstly, I am using the second way. So I am writing delta log E ohm E bar to this whole relation. Right? To this whole relation, I can write delta log E ohm E bar. And this will give me delta log E ohm E bar will be equal to beta delta Q. Now, if I multiply this whole relation with Boltzmann constant K, then let's recall the relation of entropy S. We can write del K log E ohm E bar will be equal to K beta delta Q. Now, can you identify this quantity K log E ohm E bar? This quantity is simply entropy, the measure of randomness, entropy S. So I can write this quantity to be S. So this is change in entropy, K beta delta Q. And what is K beta? K beta is 1 upon T. So from this we can get delta S is equal to delta Q upon T. This is change in entropy S. So this is change in entropy S. This is also second law of thermodynamics. What is second law of thermodynamics? We're going to discuss in unit 2.
what are the different statements, and what is this relation is all about. But here, two important things we should know. Sorry for the distraction. सॉरी फॉर द डिस्ट्रक्शन. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें जो रिलेशन यहाँ मिला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन टी. दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, उसके हम सेकेंड यूनिट में बात करेंगे. बट अभी एक स्टेटमेंट हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर सिस्टम को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि डेल्टा क्यू इज समथिंग पॉजिटिव क्वांटिटी, देन डेल्टा एच इज आल्सो पॉजिटिव. तो अगर हमें सिस्टम को हीट दी है, देयर विल बी चेंज इन एंट्रोपी एफ, एंड दिस चेंज इन पॉजिटिव डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. तो चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो. अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव. और अगर सिस्टम को आइसोलेट, अगर एक सिस्टम आइसोलेट है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो. देयर विल बी नो चेंज इन एंट्रोपी टिल द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम है, देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो तब तक एंट्रोपी में चेंज होता रहता है जब तक कि एंट्रोपी मैक्सिमम नहीं हो जाती. तो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसके ऊपर और बातें करेंगे. So for now we have discussed change in temperature, change in entropy, and now let us find out change in number of accessible states. So to get the change in number of accessible states, we will use the first method. Remember, I have written this equation in two manners. I have used the second manner. Now I am writing this relation in the first manner. In that, I have written delta OE minus log E. So I am using the first way. तो हम इस रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, log E ohm plus delta ohm minus log ohm, where this quantity is this, and I can simply write this quantity to be this, and this is equal to beta delta Q. So what is delta Q? हमें वहां से मिल गया है. डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं टी डेल्टा एस. What is beta? Beta is equal to 1 upon kt. So this right hand side to be delta s upon k. Beta t is 1 upon k. So I have simply delta s change in entropy and k Boltzmann constant. The right hand side, left hand side, sorry, log E ohm plus delta ohm upon ohm. This is equal to delta s upon k. देखिए रिलेशन हमें क्या देता है, मैथमेटिकली ओम प्लस डेल्टा ओम will be equal to exponential delta s upon k. Is this okay? Now from here, change in number of accessible states, delta ohm will be equal to ohm delta s upon k minus 1. So this is change in number of accessible states of system A if we transfer a small amount of heat to the system. So we have obtained all the results. We have discussed change in temperature delta T. We have discussed change in entropy delta S, which is now delta Q upon T. And after that, we have also calculated change in number of accessible states of system A if there is a small transfer of heat to the system. This is that. Now, after understanding all these topics, there is a question for you. So without question, there is no class. So you also have to do one question. I'm giving you some numerical values. If I say the change in
I have transferred a small amount of heat to the system A, and that small transfer of heat is delta Q is equal to uh, 10 to the power minus 3 electron volt. You can visualize the energy values. 10 to the power minus 3 electron volt. The value of delta Q. I have transferred a small amount of heat, delta Q, at room temperature. I am supplying a small amount of heat to the system, 10 to the power minus 3 electron volt at room temperature. And you know what is the room temperature? Today, this room temperature is 27 degrees centigrade. The temperature of this room is 27 degrees centigrade. So at this temperature, I'm supplying this amount of heat. And now, what you have to calculate? You have to calculate what is the percent increase in number of accessible states of system A. So this is the question for the day. I have given you the value delta Q, 10 to the power minus 3 electron volt, and you have to calculate percent increase in the number of accessible states of system A, and you can tell me this value in the comment section. You can tell me this value in the class, and we have covered two major topics of this unit, and in the next class we will be again doing all these things related to such topics. In that class, we will be discussing what is the change in number thermodynamic variables parameters due to the if system A is in contact with the heat reservoir. So once again, we will be discussing if system A is in contact to some other system which is now heat reservoir. For now, system A is in contact with the system A dash, which is a definite volume. And in the next topic, we will cover the different thermodynamic parameters when the system A will be in contact to a heat reservoir. Now, what is heat reservoir and how the systems will change due to this new condition, we will see in the next class. And do not forget to calculate this question, and I hope there will be no difficulty to find the answer. So class, have a nice day. See you. Goodbye in the next class. Thank you.